नमस्कार। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे पंडित दीपक महाराज कथक पर। बस कुछ ही समय के अंतराल के बाद कुछ ही मिनटों में हमारे साथ होंगे पंडित दीपक महाराज। Series that celebrates carrying the legacy forward. Given the current situation with the coronavirus, this program is now online. I am Matangi Keshavan and a volunteer with SpeakMake. We begin today's program with a message from the headmistress of Delhi Public School Nacharam, Srimati Shukla Das. This will be followed by an introduction by the students about SpeakMake, about Parampara Utsav, Kathak, and most of all about today's Kathak artist, Pandit Deepak Maharaj. Namaskar. Good evening to all. On behalf of the management and principal, Mrs. Sunita Rao of Delhi Public School Nacharam, it is a proud privilege for me to say a few words on the occasion of today's dance performance by the renowned Kathak dancer Pandit Deepak Maharaj, son of the legendary dance icon Pandit Birju Maharaj. It is an honor for us to have this visual treat. It is also an honor for Delhi Public School, who is always at the forefront to uphold all performing and visual arts. Dance is music in motion. It is the language of the soul by which we communicate with the universe. And the very essence of Indian classical dance is to find this oneness with our Almighty and Maker. I pray and believe that today's evening will be a soul-stirring event. Thank you. Do we have Shri Kriti? Bharat Roshan. Matangi, it's Bharat Roshan. Bharat Roshan, if you would like to introduce about SpeakMake and Parampara Utsav, please. Bharat, are you there? Being organized till 28 June 2020, all young dynamic artists who are torchbearers of our Indian culture will be participating in this Utsav. We now will have Harini give us an introduction
to Kathak. Namaste, I'm Harini representing Delhi Public School Nacharam. Kathak is one of the 8 major forms of Indian classical dance. The name is derived from the Sanskrit word katha meaning story and kathakar meaning the one who tells the story. The origin of Kathak dance therefore comes from the tradition of storytelling. The dance form has 3 major styles or gharanas: Lucknow, Jaipur and Banaras, with each one having its unique features. Renowned Pandit Birju Maharaj Ji, or Maharaj Ji as we know him, is a name synonymous with Kathak. He is not only a Kathak dancer, but also plays the pakhavaj, tabla, sings Hindustani vocal and is multifaceted. Maharaj Ji has few words he would love to share with all of us. मैं के द्वारा किया जा रहा है। भारत की संस्कृति को रखना बहुत ज़रूरी है, सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी लोग उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें बड़े से म्यूजिशियन के जो बच्चे हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे बेटे भी दीपक महाराज भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिहाजा मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ कि कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, सबको अच्छा लगे, आनंदित हों देख कर। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, धन्यवाद। Of Delhi Public School Nacharam, studying in grade 12. Deepak Maharaj Ji hails from the illustrious family of the Kalka Binadan Gharana of Lucknow. He is the 8th generation artist, having received his training from a very tender age from his father, the renowned Kathak maestro, Padma Vibhushan awardee Pandit Birju Maharaj Ji. He began performing on stage from the very young age of 9 and also accompanied his father on many concert tours in India and abroad. He has performed leading roles in dance dramas choreographed by Maharaj Ji, as well as given several solo performances across the world that were received with critical acclaim, from the far east to the far west, connecting different cultures with our rich Indian tradition. Deepak Ji is also an excellent vocalist and a very good percussionist. Over the years, Deepak Maharaj Ji has been conferred with various prestigious awards and is also certified as an A-grade artist by India's public broadcaster Doordarshan Kendra, New Delhi. Deepak Maharaj Ji is truly a torchbearer of the Kathak dance form of the Kalka Binadan Gharana of Lucknow. His daughter Ragini Maharaj, the 9th generation Kathak artist, will accompany him on the Padant today. Thank you. Deepak Ji, namaskar and a very warm welcome to Parampara Utsav 2020. It is a privilege for all of us to be able to speak to you in such close proximity, although the physical distances are vast. We are very excited. You will be sharing your art and your journey from your home to all of our homes today. And the students and I have many questions for you, and we can't wait to ask you them. Namaskar ji. Yeah. Namaskar. Deepak Ji, I'd like to start by asking you, how does it feel to be the 8th generation and to be born in a household with music and dance everywhere? If you can please share with us some thoughts, please. I feel very proud. Actually, not only me, I'm talking about the whole world who saw Maharaj Ji while dancing, and I'm just trying to follow his footsteps. All my ancestors, they did so much good work, and always I'm hearing some very nice story about what they created. So many good things in art and culture, and especially for Kathak, that you know very well. I belong to Lucknow Gharana, and the specialty of Lucknow Gharana
is, if you say, like if I speak in Urdu, so that is nazakat and beauty of journey. Always my Guruji teach me that there is journey of your hand, the linings movement, the journey of your eyes, and so many good things which I learned from Maharaj-ji, and always here. And really I feel so proud, and I think not only me, whole world. So that's why everybody take Maharaj-ji's name so respectfully. Yeah, and he deserved that, because he got so many awards, and because due to his and his son. But he never think about how many awards I received and all this thing. So we are also just trying to follow his footstep, and I'm also, because it's a very great responsibility for me. It's not just only dance, not only Kathak dancer, son of such a great legend, but it's a great responsibility. So whenever who want to see me, whenever anybody see my performance, so they always expect same like Maharaj-ji, what Maharaj-ji has done in his life. So really, this is the answer of your question. Yeah. Thank you, Deepak ji. Absolutely wonderful to hear that. Thank you. Deepak ji, now we have 3 students, Shweta, Rahul, and Shrikari, who have some questions for you. Greetings to everybody. I'm Shweta Sapaseti of class 12 of DPS Delhi Public School Nacharam, and my question is, Guruji, your father Pandit Birju Maharaj ji was your dance guru as well. How was your relationship with him? आपको आपके पापा से डर लगता था? नहीं, डर तो नहीं लगता, क्योंकि वो वैसे ऐसे वाले गुरुजी नहीं है. And actually is very soft by heart and is very soft spoken. But ये जरूर है कि if I'm doing some mistake or if I'm not practicing and something like that, so he always say कि देखो बेटा, अगर कुछ अच्छा काम करोगे, अच्छा रियाज करोगे, he always just give the direction to go the right track. You understand what I'm saying? You understand? You understand? Can you hear me? Yeah. Yes, Guruji. So yeah, so always Maharaj-ji teach us that this is the right track. Now you have to move on this. तो वो इतना ज़्यादा कभी भी उनका मैंने कभी एग्रेशन नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं, but he's very quiet, and इसलिए शायद that's why he's Maharaj-ji, क्योंकि वो बहुत cool भी हैं, and he's a master of Kathak that you know very well. He's a master. Yeah. Thank you so Next. much, Guruji. Most welcome. Yeah. नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। तो महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि आपको बाहर जाकर खेलने का मन नहीं करता था? सारा समय डांस करना बोरिंग नहीं लगता था? अच्छा, ये मैं सोच रहा था ये प्रश्न करने से पहले मैं खुद ही उत्तर दे दूंगा इसका। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, और बचपन में मैं अगर आज डांसर नहीं होता तो शायद मैं क्रिकेटर होता। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, और ये आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज से करीब 30 इयर्स पहले की बात है। और बहुत अच्छा मेरा क्रिकेट था, और बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों अच्छे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझ पे कोई रिस्ट्रिक्शन से या मुझे ऐसा कहा गया कि तुम्हें डांस ही करना है। बट साइड बाय साइड में डांस भी करता था और मैं खेलता भी था। लेकिन वो क्योंकि घर का माहौल कुछ ऐसा था कि हमेशा जब देखो तो कुछ आर्टिस्ट वाली बातचीत होती थी घर में, है ना। जैसे कि जब देखो म्यूजिक की बात हो रही, कुछ कंपोजिशन की बात हो रही है, डांस की, तो मुझे ये तो मालूम था। और जो मेरे दोस्त थे जो क्रिकेट खेलते थे उस टाइम पे, उनको भी ये पता था कि मैं आगे चल के डांसर ही बनूंगा या म्यूजिशियन बनूंगा। लेकिन मैं बहुत अच्छा खेला हूँ। मैंने टेबल टेनिस भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है, सब खेला है जी।
अब नहीं करता हूँ, अब तो डांसर ही हूँ जी। और कुछ? श्रीकरी जी। Pranam Mahodaya, this is Srikari from Delhi Public School, Nacharam. And my question to you is, being the son of world famous Kathak dancer Pandit Birju Maharaj, what were your efforts to crave for your own identity? What is my what? Can you repeat again? Yes, sir. What were your efforts to crave for your own identity? My identity? Oh. Look, whatever I have learned from my Guruji, Maharajji, first is still I'm just trying, okay, whatever I have learned from him, I should do paramparik, that means traditionally style. And that is my first step. And I think maybe this is the last also. So I never think anything, but under Maharajji's choreography, I participated in so many choreographies, like जैसे कहते हैं ना कि कुछ नया और कुछ पुराना, कुछ बिल्कुल लेटेस्ट जैसे आधुनिक भी होता है, सो लाइक सम मॉडर्न ऑल्सो सम, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया है एंड मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइफ में। बट स्टिल मैं उस ट्रेडिशन को बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ, आज भी वैसे ही फॉलो करता हूँ। हालांकि कथक में यू कैन सी सो मेनी थिंग्स people are doing, means so many teachers and so many Kathak artists एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं, so they all are doing some like contemporary fusion and all these things. So somebody asked me that, Deepak Maharaj, are you doing something new? So I said, oh please just leave me. I said just leave me. Let me do whatever I have learned from my father, and because सारी दुनिया and everybody is doing contemporary and whatever, something new experimental, और कथक के अंदर there is so many options, so बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं अभी तक traditionally I am following the same लखनऊ घराना style, और उसमें भी कोई छोटी बात नहीं है, whether you are doing laikari, whether you are doing upachkari, if you are doing any bandesh, and you are doing your lay should be very nice. Your lay, your expression, your eyes and your movement, every should be very nice. तो वही मैं कर रहा हूँ. Okay? Thank you, sir. Welcome. Deepak ji, abhi we have Siri and Sanchita who have questions for you, please. Greetings everyone. My name is Siri and I'm of Delhi Public School, Nacharam. So sir, my question to you is that, sir, did you ever feel the pressure of being a son as well as a student of such a great artist known as Kathak King before giving any performance? And how was it feeling like, sir? How I feel like means you're talking about Maharajji? Sir, like before giving your performance, you might have some pressure that you're a son of such a great artist. So how did you feel? What was your feeling at that time before giving any performance? What is my feeling before? Yes, sir. You're talking about right now, which now I'm going to present this performance? Sir, any performance it might be. I always suniye, what I always sing. Actually, I did so many programs in my life. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Look, actually, I did so many programs under my father's choreography and compositions and solo. But whenever I come on the stage, I always see it's a new chapter. Because different place, different people, different audience, their opinions, so many things. So I always think wherever I go, but never I think more like overconfidence, nothing. Every time I feel this is my new chapter. Like I'm giving your question, answer, is going on here. After that, then I'll perform. It's a new chapter for me. So I always just charge myself, always, by mind, by heart and everything.
Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. Welcome. Okay. Good evening, sir. I am Yeah. Santosh, a student of grade 12 of Delhi Public School, Nacharam. My question to you, sir, is when you go abroad, you must be feeling very proud to be an Indian. How do you show that patriotism through your dance? Yes, really, I feel very proud that I'm Indian, and we all are representing our Indian culture, music, dance, and even we got so much good response from the audience. Always, they appreciate so much, really, and that I like very much. Even I traveled with my father so many times to USA, in UK, well, all over the world, all over the world. Some, I think some countries maybe I have not touched, but mostly wherever in USA, it's maximum majority I've seen. They are fond of to see Kathak dance, and they always, and due to because my father's name is, he's so famous, so they always invite my father, and मैं अपने पापा के साथ भी पीछे पीछे चला जाता हूँ just only to, but I always have a good experience in USA, in UK, everywhere. Thank you, sir. Is that your question? That was your question? Sir, I actually asked, how do you show your patriotism through your dance for the country? Patriotism to your dance, to your country. अच्छा. हाँ, तो वो तो डांस के थ्रू हम we always show that, yeah, by, because look, actually we are very great devotee. This is not only dance. Sister from since last so many years, they all are doing puja, aradhana. So we are a devotee, and we know that we have to worship every time. That's why God is with us. So you can imagine, since 7th generation, we are just PD that PD, we are doing all this work non-stop. I come in 8th, my daughter come in 9th generation, Ragini Maharaj, she's also perfect dancer. So why? Because while listening all great gurus story, so now we are trying our best to do how much we can do. Yeah. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Acha ji, thank you. Aditi, Adya, and Ayush, would you like to ask your questions to Deepak ji now? So many questions. नमस्कार. Okay. नमस्कार एवरीवन. मैं अदिति कक्षा 12वीं की छात्र हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारम से. गुरुजी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपको डांस करते समय कैसा लगता है, क्योंकि अक्सर कई लोग ये मानसिकता ले चलते हैं कि नाट्य और नृत्य ये महिलाओं की कला होती है. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपको किसने कह दिया कि ये महिलाओं की कला थी? सर, मेरे हिसाब से तो मैं ये ऐसा नहीं सोचती. Let me explain you. हाँ. Okay, please allow me. मैं आपको बताऊं, पहले ये पुरुष प्रधान नृत्य था कथक. पहले पुरुष ही नाचते थे. ये हालांकि जो लेडीज महिलाएं जो आई हैं, ये जब हम लोगों के मुगल जब ये सब आए शासन, तो उस समय इन लोगों की एंट्री हुई. मतलब ये जितनी भी उस समय, तो अब आज भी हम लोग वो कॉम्पोजिशन सब महाराज जी ने किया हुआ है, जैसे महफिल होता है या रुबाइयाँ होती हैं इस टाइप की, तो उस जमाने का वो ये सब कॉम्पोजिशन था. तो ये इनकी एंट्री बाद में हुई. ये साइकोलॉजिकली लोगों को ऐसा लगता है. और सबसे बड़ा बात तो यही है कि सबसे पहले तो आप महाराज जी को देखो. महाराज जी तो पुरुष हैं और कितने फेमस हैं. हाँ, मैं भी उसी ट्रैक पे हूँ, और अभी हमारे साथ हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, सब लोग काफी लड़के हैं जो हम लोगों का अपना महाराज जी की जो हम लोगों की संस्था है कलाश्रम में, बहुत लड़के हैं. तो ये साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है.
कि अच्छा वो लड़के हो के तुम डांस कर रहे हो लड़कियों वाला। नहीं, हम लोगों का ऐसा नहीं है। आपने कभी हम लोगों का रियाज नहीं देखा, कभी आप हमारा रियाज देखेंगे ना, हम लोग इतना केजी घुंघरू बांध के, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, बरसात हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हाँ, चाहे बुखार भी हो रहा हो, लेकिन हम लोग हमेशा अगर एक बार जो प्रण कर लेते हैं ना, जैसे आर्मी में होता है ना कि लोग बिल्कुल प्रण कर लेते हैं, तो वैसे हम लोगों का होता है कि बिल्कुल प्रण करके हम लोग रियाज करते हैं। तो होते हैं कुछ थोड़े से हल्के नाजुक भी होते हैं, लेकिन हम एक्चुअली हम वैसे नहीं हैं, हम नाजुक वाले नहीं हैं, हम थोड़ा स्ट्रांग वाले हैं। ओके, थैंक यू सर। Yeah, your headphone is very nice. It's looking very nice. Headphone. Yeah. Okay, next. Yeah. नमस्ते सर, मैं आद्या दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचारम हैदराबाद में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा। मेरा आपसे ये प्रश्न था, जब हम भारत और इसकी विरासत पर कई किताबें पढ़ते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत शांति और एकाग्रता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कृपया मुझे इस विषय पर अपने विचारों के बारे में बताएं। हाँ, क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि लोग शास्त्रीय से दूर भाग रहे हैं। जी। देखिए, जब तक आप उस चीज को फील नहीं करोगे ना, जब तक आप उस चीज को महसूस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी शांति है। ये पूरी हिस्ट्री है, ये पूरा इतिहास है। मैं सिर्फ केवल कथक की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी दूसरे आर्ट फॉर्म भी हैं, चाहे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, उड़ीसी है। ये इसके पीछे पूरा एक ग्रंथ है, शास्त्र छुपा है, और पहले जमाने में यही सब होता था। आज क्या है, थोड़ा सा वेस्टर्न की तरफ ज्यादा सब लोग जा रहे हैं। हाँ जी। नहीं तो शास्त्रीय नृत्य और संगीत में आपको जो शांति मिलेगी ना, जिस दिन आप इसमें इन्वॉल्व होगे, उस दिन आप फील करोगे इस चीज को। इट्स लाइक अ मेडिटेशन। लुक, व्हेनेवर आई डू माय प्रैक्टिस, मैं आपको बता रहा हूँ, आई स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। मैं सारे कर्टन उसको एकदम क्लोज कर देता हूँ कि रोशनी ना आए, एंड मी एंड माई घुंघरू, केवल घुंघरू की आवाज होती है और मेरा उस पर ध्यान होता है। तो वो क्या है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। यू अंडरस्टैंड? यस सर, आई विल अंडरस्टैंड। हाँ, तो बस आपके इस सारे क्वेश्चन का यही आंसर है जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नमस्कार महोदय। हाँ, नमस्कार गुरुजी, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम है आयुष चौरसिया। अच्छा। और मेरा सवाल ये था कि कथक एक ऐसी कला है जिसमें बहुत सारे प्रदर्शित चीजें होती है। तो मोर जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, क्या हम एक मोर को कथक की कला के द्वारा दर्शा सकते हैं? हाँ, शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जी, ठीक है ना। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा ऐसे मोर पंखी हमेशा अपने बाल पे ऊपर ऐसे रखते थे। और जैसे आपने वो राष्ट्र पक्षी की बात की है कि मोर है, तो हम दर्शाते हैं। शायद आपने कभी देखा नहीं होगा कि मेरे पिताजी भी कितने बार मयूरगत करते हैं। मयूरगत मतलब उसमें ये पूरा मूवमेंट होता है, जैसे उसके पंख को दिखाना और उसकी चाल जो होती है। तो ये तो प्रतीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, जब हम उनको ध्यान करते हैं तो मोर की व्याख्या वो तो सामने आ ही जाता है जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग तो दिखाते हैं मोर, और बड़े सुंदर ढंग से दिखाते हैं। हाँ जी जी, शुक्रिया सुनने के लिए। जी जी, अच्छा, ओके। Deepak ji, Abhi, thank you so much for sharing these inspiring and encouraging stories. We'd like to begin the performance, please, whenever you're ready. हाँ, बस I need 3-4 minutes so I can set this. The beginning, actually, I'm going to present invocation, Shiv Vandana. Okay, and
जैसे भी बीच में जहां आपको लगेगा कि कितना लंबा परफॉर्मेंस मुझे करना है, यू जस्ट लेट मी नो हाउ लॉन्ग आई हैव टू परफॉर्म. ओके? Sure, Deepak ji. Yeah. So Thank now you. I'm presenting Shiv Vandana. Yeah. Thank you. Okay. While Deepak ji is preparing and tying his ghungroos and preparing to perform for us, I just thought I'll take this opportunity to give a little more background about the Kalka Bindadin Gharana to our viewers. So did you all know that Bindadin Maharaj ji was the originator of the Lucknow Gharana? He and his brother, Kalka Prasad, received training from their father, Durga Prasad ji, and uncle, Thakur Prasad. Together, they became the most noted dancers of their time. They evolved the structure of modern Kathak tradition as we know it today by combining all the dance elements into one radical yet graceful style. Kalka Prasad ji was noted for his rhythmic expertise, while Bindadin ji was adept at composing and also became very famous for his poetic interpretations. Kalka Prasad ji had 3 sons, Achan Maharaj ji, Lachu Maharaj, and Shambhu Maharaj ji. Bindadin ji went on to pass on his knowledge to his nephew Achan Maharaj ji, who in turn passed on the knowledge to Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj ji. I hope this gives you a small insight into how the art has been passed on from generation after generation and how the family has kept and contributed to the rich tradition for so many decades. Today, we're so blessed to be watching this rich art form from Pandit Deepak Maharaj ji. Deepak ji, over to you. I am starting with Shiv Vandana, Angikam Bhuvanam.
नमः शिवाय नमः शिवाय। That was an invocation after Shiv Vandana. Now I am presenting, it's a time cycle, 16-beat time cycle, 16 matra, in which now I am going to present Sapurva, which is an improvisation. ये इसको उपज कहते हैं, उपज जो कभी फिक्स नहीं होता, 16 बीट्स में 16 के बाद जो 17 आता है वो सम है। तो पेश कर रहा हूं आपके सामने उपज। खूबसूरती नजाकत लखनऊ के स्टाइल की एक दो खाता हूँ।
Lucknow style. What I show you this one. After that, non-presenting Uthan. भगवान शिव के डमरू से निकली हुई है एक नाद जो गूंज है। दिगे 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 दुग 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 डिमा के डिमा के डिमा 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 के डिमा के डिमा 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 के डिमा दिगे 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 दुग दुग दिगे दिगे दावा है दिगे 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 डिमा के डिमा के डिमा 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 के ता का डिमा के दावा का दागी से दा दा ला का दागी से दा दा ला का दागी से दा दा। So basically when we do Uthan, वो इस पे ही आधारित ज़्यादा होता है। पेश है उठान। पहला थेटा थेटा थे देखिए तो थेटा थेटा थे थेटा थेटा थे देखिए देखिए थेटा थेटा थे तार में थे तार में थे तार में थे थेटा थेटा अब थेटा ता थे
घी इस लाइक अ ट्राइंगल और उसके अलग अलग ये आपने भी देखा कि विलंबित में थोड़ा सा मत रहेगा कुछ चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब थोड़ी सी तैयारी in which you can see fast with grace. So fast भी है और उसके साथ grace भी है, eyes भी है, expression, everything. So now I'm presenting बराबर के लेने कुछ लक्ष्य। You please let me know how long I have to perform. So wherever you say, then I will stop my program. Wherever you say. Whatever you say. Okay, so now I'm presenting. पहली बंदे There is so many thousands which my father made. So I'm just going to show you some few. The second thousand is like this. Double.
दूंगा ता दूंगा तगिट दूंगा तगिट दूंगा तगिट 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 दूंगा दूंगा तगिट 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 दूंगा तगिट 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 one mukha de tagit taka 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 tagit taka tagit taka 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 ndala tinda tinda ndala tinda ndala ndala tinda tinda ndala tinda taka hey ta gila which I told you, this is 16 feet time cycle. I have to come on 17. This is called flash.
महाराज जी नंबरों के इजया तार दिन देवता 1 से 8 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 7 7 6 5 4 3 2 It's a meaning behind of that. Snake and ladder. We play this game. Where like that. 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 5 1 2 5 7 1 2 5 7 6 5 4 3 2 Now the number is coming reverse. It's very interesting. 7 is touching 8 and then coming on the place. 7 is touching 6 is touching 'nature' he made so many things, which I show you, snake and ladder. There is two friends. One is very lazy and one is very active. This thing is created by Maharaj. So one friend who are very lazy, he is saying, this is basically, actually this is Tihai, but behind of this Tihai, Maharaj ji made two friends. One is lazy and one is very active. Very close friends. They are very close friends.
Finally, we took him to work. This was a very interesting thing. Why I am giving all this example? Just only to clear whatever I am presenting. Behind of any presentation, there is some mood, some meaning, which we have to imagine. This is my meaning. Din din na, आगे बढ़ो. Din din na, थोड़ा रहे. Din na, ये एक है. Din din na, din din na. Gadin. This is very traditional Lucknow grammar. Din din na, din din na, din din na. Gadin na, gadin na, gadin na, gadin na, dhaan na, dhaan, 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 dhaan. Matangi, I just want to ask you, how long I have to perform? Whatever you say. Achha. Now I am presenting one very beautiful composition as written by my great grandfather, late Pandit Binodin Maharaj Ji. Holi. It's a color festival. Everybody knows Holi. So now I'm presenting Holi.
नाचत को चट तक मट तक नाचत को चट तक मट तक बहुगत भाव बनाए बहुगत भाव सब मद पिए बह रहे जिंदा सब मद पिए बह रहे जिंदा इनसे भाग कह जाए देखो देखो हरि के देखो हरि के So that was a very small demonstration of Holi. My father made Holi Dhu Machori, and that is quite wrong item. So now, whatever you say, I will present. Okay, should I show you some Gat? Okay, fine. Now I'm showing one Gat Bhav. One Gat Bhav, in which I saw my father do very beautifully, but nobody can do like same. But I will try. Little Krishna stealing butter from milkmaid house, and Yashoda is getting angry. What you did? You spoiled everything. So now Martin show you.
Tinna. Now I'm showing Gatnikar one talwar sword figure. Tinna. All my ancestors, they made so many Gatnikas, so many Gatnikas. Now in last part, I am just presenting one or two things, just one technical and one Tihai, and in last I will do nothing. Now I am increasing the speed of light. The time will be high. Thank you very much. Thank you all. ठीक है। Is that okay? We cannot hear you. I can't hear your voice.
Should I wind up? No, it's okay. No more question. Okay. No more question. Thank you so much, Matangi, Sukriti ji, Matangi ji, and everyone, whoever are there. I'm very grateful, very thankful to speak my case and all this. Thank you, Deepak ji. अभी मातंगी बात करेंगी क्लोज करने के लिए. जी जी. पानी पिला दे. Where is Matangi ji? Hello, Sukriti ji. Hello, Sukriti ji. Where is The show, no problem. मैं तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इतना खूबसूरत आपने डांस किया और इतना पेशेंटली आपने सब बच्चों के हर तरह के सवाल का जवाब दिया. उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका. और सबसे ज्यादा पंडित बिरजू महाराज जी का. उनके तो हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे ही, महाराज जी के. हम जितने भी शिष्य हैं, उनकी शिष्याएं हैं. एक्चुअली आभार शब्द जो है गुरुओं के लिए नहीं होता, वो तो एक ऋण होता है, ऋण, तो वो कभी पूरा नहीं होता जन्म में. तो थैंक यू सो मच. आपको भी धन्यवाद मातंगी जी और जितने भी लोग थे वहाँ. आप सबने बहुत सुंदर ढंग से कोऑर्डिनेट किया एंड होप टू सी यू sometime. Thank you so much. Namaste. Let's see, ये कोरोना वायरस खत्म हो, so I really wish to come over there to perform. Definitely. Yeah, really I wish to come sometime. Thanks to all, and she's my daughter, Ragini Maharaj. Let's meet my daughter. She was doing padam. Namaskar. So thank you so much, Ragini. आपने इतनी मेहनत की बैक एंड में सब सेटअप करने के लिए और फिर इतनी खूबसूरत पढ़न. मेरा भाई भी है यहाँ पे, आर्यव आनंद, उसने बहुत हेल्प किया और हम सब लोगों की. Thank you so much, Arav. Always a teamwork. Lovely, very nice. Thank you so much to each one of you, and I'm requesting all the persons who are watching this, please join us again tomorrow evening at 6:30. We have Dr. Ambi Subramaniam, who will play the Carnatic violin. He is the son of Dr. L. Subramaniam, the Padma Bhushan awardee, and we are all looking forward to that program by a really young artist. Thank you so much. Okay, namaskar. Thank you. Good night.